Is my slide is visible to all? Yes, sir. Yes. Okay, thank you so much. Yes, So, sir. okay, I welcome you all in this particular post session of NEP sanitization program. And in this, I am going to take you through the skill development part of it. Now, uh, people says like teachers has is or teachers has uh, a different breed actually. We are what we can say is not the normal people, or our profession is not normal. Why they are saying is because we are not doing the same thing again and again. We are evolving ourselves. We are making ourselves upgraded, as well as we are giving the same thing to our students, and mainly for the students we are doing that, right? So you all agree on that, and that's why you all are here for this particular NEP program, and the part of it is skill development. uh, Here I am not going to tell you not only the theoretical part of what skill is required for us as a teacher, as a researcher, what are the tools out there, by taking the help of it, how you can enhance your skill, right? So today's talk is mainly have two part as I'll go. One part will be like we'll go to the theoretical part of it, and slowly we'll move on to the hands-on part of it. There might be the tool that you already have gone through, you already are using it, then it is well and good. We'll cover that for those people who haven't gone through those tools and techniques till now in their teaching or research curriculum. And then we'll finally have the window to open for question and answer. Meanwhile, in between, I may take break of let's say 10-15 minutes, and then we'll again proceed. So that will be good to all, I think. Second thing I want to ask, like, can I go through with the English, or you want me to also go through with Hindi or English? Anyone? Sir, both the languages convenient, sir. If it is possible, Hindi and English, it is very convenient, sir. Yeah, that's why I'm asking. So let's start in this. In the previous days, when there is a like days of Gurukuls, you all know that, right? गुरुकुल के दिनों में कैसी पढ़ाई होती थी, कैसा माहौल रहता था, राइट? एंड that NEP is trying to emphasize on those days curriculum to our current day, like how we can enhance the skill of the students, how we can make them to be ready for the society, how we can add some value on their education, right? So all these are the G's of NEP, right? So NEP 2020, and it has been, see, in our institute, if I'll say I belongs to the School of Engineering, so in our institute, we are following for the last 3 years, and the NEP batch is right now in the, I think, in the 5th semester. So again, 3 semesters to go, and we'll have one NEP uh,
oriented student who will be coming out from this particular NEP curriculum, right? So they have done many changes, but to adopt those changes, we also need to be ready for that, right? So that's why these orientation is going on, and as a faculty member, we need to cope up with all those changes. So जैसा मैं बता रहा था, like the old days teaching and the in new era, how we are teaching are completely different. The reason behind this is because today's we need to complete the syllabus, we need to take the tests, we need to follow the academic calendar. Apart from that, we need to do many more work. As I told you, like teacher are the very separate breed, right? And apart from teaching and research, we are also involved in different administrative activities, different activities related to the student welfare, different activities related to the institution building activities. So इन सबको ध्यान में रखते हुए how we are enhancing ourselves, right? How we are improving ourselves as a teacher. That also we are doing in a continuous basis. So let us go into that. And here in this particular part of that will take around 45 minutes to complete. So in that particular part, we'll see what are the skill that we need to acquire as a teacher. And हम लोग एक दो skill को थोड़ा सा elaborate करेंगे and we'll try to find out the solution for it. And I also tell you some of the tools and techniques which will help you in your teaching activity, to manage your teaching activity, to manage your research activity. Okay. So this will be your whole structure of this particular session. Now I'm taking. तुम देखो कैसे मैनेज करना है. Okay, so let us go into that. Here, this is how we can defining a teaching process, right? So if I'll say a teaching is the thing that we are doing all the time, right? Now, I want to ask you whether my slide has been changed or not in the definition of teaching. It has been changed? Yes, sir. Okay. It has been changed. Great. Yes, Great. sir. Fine. Thank you. So if we'll define what we mean by a teaching, so you all know it is a process of facilitating and guiding learning, right? And we are the facilitator for the student so that they can learn a different knowledge, right? And skills and information in a different way. Occurrence of organized setting like classroom or educational institutions, we have a different set of rules and regulations that we need to find out. So based on that boundary, we need to do our teaching and research activity. And mainly, if we'll talk about the teacher, as a teacher, how we are disseminating our knowledge, how we are giving our skill, or how we are improving the information of any student, that will be based on how we are prepared or what preparation that we have done accordingly. So the key element, if we say facilitation of learning, knowledge and skill transfer, structured environment. And what is the goal? To help learner acquire new understanding and ability, foster intellectual, social, and personal
development. This is the goal of. Now, as a teacher, what is the role uh, towards the society? So teachers are builders, right? Because the teachers are giving the shape to the society. Uh, the society is as good as the teacher because the teacher is building uh, the character, the knowledge, and the skill into the students, right? So we have a good number of responsibility in our shoulder. Educational foundation, teachers provide the foundation for long life learning. They empower individual to navigate the complexity of the world. Nurturing future generation, teacher nurture the intellectual and moral growth of the student. They inspire curiosity, critical thinking, and empathy. What else? What are the other roles of a teacher? Shaping values within the young minds of the student. Catalyst for change. What are the see nowadays as a teacher we are interacting with the student of different background. They are coming from different geographical area. They are from different social status, right? And to accommodate all those things and putting into one equal benchmark is very much crucial for a teacher to to see all the student as one, right? And that will show the character. And from you only, the student will learn that how you are behaving in your classroom. Impact of teacher and student life, it is very crucial. See, in our, let's say, if we'll talk about the curriculum of BTech, it is of 4 years. So the student spent 4 years of their life here in the institute. They used to be here in the hostel or nearby, but they are always connected with their teachers based on what are the role that has been given to a teacher, whether he is a class coordinator, whether he is taking any subject, whether he is involved in any project, right? But one way or another, a teacher is actually the part of the student life. And how you are influencing the student is very much important. How you are uh, listening to their problems, giving like giving help in their mental growth, right? How you are mentoring. So all these things do matter to the students. So these are the things that are really impacting the student life as a teacher. So first is the teachers as influential figure, academic growth for that, personal development. We know that the NEP talks about holistic development of the student, character building, adding the value in their behavior, and the social skill development. These are all the part of the NAP, which is talking about. And as a teacher, not only the subject that we are teaching, we also have to teach them all those things. That is the holistic development of a student. Teacher could be the inspiration to the student. So the student will see the teachers how they have dressed up, how they are behaving, what how you are reacting with any of the situation. So they are actually observing you, and based on that, they inspire by you. Confidence and self-esteem, long life learning, long lasting impact, right? So ultimately,
teacher have the power to shape not only academic success, but also the character and future of their student. Now, let us talk about some of the important key skills that that a teacher should have, a faculty should have. And before that, we'll see that why these skills are essential for a teacher. So we'll see what are the skills that are required. I have listed out some 10 skills that a teacher should have. Before that, we'll see that why these skills are essential. So first thing is foundation of effective teaching. If we think that we have to be a teacher who will be impactful, who will be effective, who will be efficient, then those skills should be acquired by the teachers, or let's say they need to do the practice on those skills. Adaptation of diverse need. We know that like the way of teaching of the old days has been completely different in today's world where technology taking place in our day-to-day activity. Students are also involved in different technology because they have a smartphone, they have the laptop with them, they have iPads with them, and they are playing around with those gadgets, and they are very fond of it, right? They are doing different activities with that. So we also need to be some sort of adopt the diversity so that we can map with their frequency, right? Building positive relations. Empathy is a very true word that has been listed here, which should be there with the teacher. So that skill we need to increase. Maximizing learning potential, classroom management. Our classroom management should be good. So for that, the skill you should acquire to how to manage the time, how to manage your academic and your administrative work together. Staying relevant, right? Whatever examples will give, whatever technology, whatever knowledge that will give to those students, that should be relevant to today's world. Otherwise, they won't be, or they are not going to listen to you in your class. Otherwise, they will say that it is very outdated and whatever you are saying is not at all applicable in today's world, right? And the main thing is student success. We do not identify the student success that how much marks they are getting. Apart from that, how good behavior skill that a student will have when it will go from your institute. It should have the more sensitivity or more sensitive towards their family. They should be more sensitive towards their surroundings. Ultimately, they have to be more sensitive towards their nation building, right? So those skills that we need to develop by enhancing your own skills, right? So now we'll talk about that how this key skill enhances it. So when we find out those skills in ourselves, it will elevating your teaching experience. It will facilitating effective learning, nurturing future leader, promoting long life learning, fostering the positive educational culture, adapting to educational trend, shaping the future. See, we know that today's education system has been evolved and the landscape has also been changed, like how we are interacting with each other. With the help of this technology, which is a video and audio that has been that is reached to you, and with the help of this technology, we are disseminating the knowledge, right?
So previously, we need to adopt, if we want to acquire any knowledge, we need to be physically present there. In today's world, it is not at all required. I can learn, I can upgrade myself uh, anywhere in the globe, and I should have a basic technology with me. Then I can do that, right? So, how the landscape has been changed towards the education. So first thing is evolution of education. Education has undergone significant transformation in the recent years. Changes in technology, demography, societal need reshape the education landscape. Digital revolution. We know that the technology has revolutionized the education system. Online learning, digital resources, interactive tools have become the integral part of the teaching, modern teaching nowadays. Diverse student body, right? We know that the students are coming from different background. They are very diverse way of their background are. So like most of them are from the state uh, board that are coming here. Most of them are, let's say, the central board, CBSE, which are coming here. Uh, Most of them are, let's say, from all part of India, right? As well as some international students we are having. So you see the diversity of the student in the classroom, and as a teacher, you need to produce those skills. You need to acquire those skills, which will help you to make justice to all the students who are there in your classroom, right? So diversity is there, right? As I told you, the language, region, the family background, from where they belong, all those things does matter. What are their, let's say, the financial status, all those things does matter. And as a teacher, we need to take all the diverse, what we can say, diverse population into one. New pedagogical approaches. We know that we have evolved from our traditional way of teaching in the classroom. We have the activities like flipped classroom, project-based learning, personalized education have gained prominence. We have outcome-based education. We have uh, uh, the blended mode of education where we have this MOOC courses that we recommend to our students. We have learning by doing, right? So all those are the pedagogical approaches that we adopt in our teaching activity, right? Long life learning. This is for the teacher, right? So teachers are always learning new techniques, new thing that has been adopted, new requirement of the society or the nation, and based on that, the teacher is upgrading itself. Right? Emphasis on soft skills. Soft skills, if you say, what do you mean by what are the critical way of teaching? How we are enhancing the creative thinking of the students, right? All those are coming under assessment and accountability. What are the ways that we have find it out to assess the student? Whether it is a purely traditional way of taking the test and a written test or the viva, or what are the ways that we are assessing the students, that are also has been changed, right? So these are the different changes that has been done. Now let's talk about the key skills related to the success uh, as a as a teacher. So as I told you, I have find it out these skills that faculty should should have, right? And as a teacher, we should have all those
skills with us. So the first is the communication skill. How effectively you are teaching to your class, how effectively your teaching is. Now, if we'll talk about the communication, so we have two type of communication. The first thing is direct communication and indirect communication. If anybody will tell me what do you mean by direct communication and what do you mean by indirect communication for a teacher in the classroom? Sir, communication is the lecture method, the practical method that we are giving the demonstration to the students. Okay, good. And indirect? Indirect means, I think, as per my view is concerned, the material that we are providing to the student in the online mode, like the Google Classroom and WhatsApp and other channels. Okay, great. So here the skill has two parts, as I told you, direct and indirect communication. Direct communication is what I am dealing with you. जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और कुछ अडॉप्ट कर पा रहे हैं. I am not saying that whatever I am saying you are fully taking 100%. Right? It's not at all possible. Because at what time, what is going in your mind, you cannot do the full concentration in all the time. The same way the student will also have. But nowadays, student have the more indirect way of disturbance, right? Student have, let's say in the previous days, it doesn't have much to think. We doesn't have much who can disturb us. But in today's student, as a parent also, you will realize that our children or our student have lot of things that could disturb, that could dissolve their concentration, right? So in a direct communication, how we are interacting with our student, how we are engaging our student in the class, right? Mainly this comes under your direct skill or direct communication skill. And the engagement, how to increase the engagement in a class is up to the student. It is up to the teacher. They're making their class more interesting. It depends upon the teachers only, right? So सबके अपने अपने तरीके हैं क्लास में बच्चों को एंगेज करने का. कई टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, कई टीचर कुछ एक्टिविटी कराते हैं, है ना. कई टीचर सब पे ध्यान रख के and they used to ask the question, they used to encourage the student to ask the question, right? So all these things are coming under direct communication. Now indirect communication की अगर बात बताएं, yeah, anything anybody want to ask? I request host to please look after the noise in between. Okay, thank you. So if we'll talk about indirect communication is like how you are behaving in your class, right? Whether you are allowing your student to ask the question, whether you are your पेपर रहेगा कीबोर्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा.
I request the host to please look after the noise that are coming. बस 10 बजे की याद करूँ कल बनाने तो काय किलो करते हैं Can I go ahead? Okay. So, as I was talking about the direct and indirect communication skill that a teacher should have, like, see, आप कैसा व्यवहार करते हैं अपने क्लासरूम में, उस पे डिपेंड करता है. दैट इज द इनडायरेक्ट communication. Indirectly, how you are making your student comfortable in your class. You are allowing them to ask the questions. You are allowing them to tell their problems to you. See, कई हमने अपने अपने भी जीवन में कई टीचर्स देखे हैं, राइट. बट हम उन्हीं टीचर को याद करते हैं आज के डेट पे, या उन्हीं टीचर से ही इंटरेक्ट हो पाते हैं जो कि हमको अलाउ करते हैं they should ask the question. Otherwise, we'll hesitate in the class that if I'll ask the question or if I'll do something, then the teacher will scold us, right? So if you are not making your teaching classroom environment in a very strict, and so definitely a student will ask a question, a student will be involved more in your teaching, and that is your indirect communication. Okay, that indirect communication skill should be good for any teacher, because you are allowing your student to be encouraged in your class to ask the question, to be more interactive with in your class. Otherwise, they will become like dull one-way communication, and it is not going to help anyone, right? So for that, the indirect communication is very much, the good indirect communication is very much required. See, indirect communication is also depend upon like how you are joining the class. Let's say your class is starting from, let's say, 2 o'clock. So when you are reaching to your class, you are reaching 1 minute before or on time or after 2 o'clock. So this is what I'm saying is indirect communication with your student, right? What you are wearing, how groomed you are, right? All those things are coming under that. So we need to have a proper way of dressing sense. We need to have a proper way of standing there, communicating with them. Sometimes smile will do all the work, right? So all those skills come into the communication skill that as a teacher that will do. Second skill that we need to improve is the adaptability. Adaptability is, again, like how we are adapting with our changes that has been done in different ways of curriculum development. Let's say some subjects that we are dealing with, has the syllabus has been changed, or new method or new point has been integrated into the syllabus. The way of teaching has been changed. We have seen, like in the pandemic, the way of teaching, the whole pedagogy has been changed from the physical classroom interaction to the virtual interaction, right? So how we are dealing with it. So adaptability is very much important for a teacher, because down the line, every 3 year, 4 year, 5 year, there are some changes that has been come into our teaching career, and we know that how we can deal with it. So
how we are dealing with them and how the adaptability, how you are adapting your landscape changing, that is very much important. Third thing that a teacher should have is the classroom management. See, classroom management is very much important. Why? Because let's say for initial days we used to take the classes on time and we need to give them the course material, we need to have a good interaction with the student. Later on that there is a lag on that, and a student who are, let's say, initially very enthusiastic in your class will become very low performer in your class. That could happen based on, let's say, we were very busy, we were working, or we are doing more time to our research or some administrative activity. So the classroom management is very much important, and it is depending upon that how importance you are giving to your classroom activities. You should manage. It is. I'm not saying that we should be strictly following the class timetable or the outline that we are giving for them. But yes, we need to make justice to the student who are giving time in your class to be in the class or to deliver your lecture, to complete your course, and to do all the activities which are there related to the subjects, right? Fourth key skill is the subject knowledge, and we know that we all have this, right? Without subject knowledge, we cannot teach the subject, right? So we should have a thorough knowledge related to our subject that we are dealing with. That is not, I can say, the key skill, but yes, it is very much inherent inside the key skill of any successful teacher. That the subject knowledge should be very thorough related to what subject you are teaching. Empathy I have added here because I want to tell you, not only from the indirect communication, we can create the empathy. Also, like if you can just listen to the student problem, then also it can solve many problem of the student. Let's say if you're not physically or if you're not giving the solution to the problem of the student, but you just constantly. Second year of English. Okay, so but you, if you'll take some time and to listen to the problem, what okay, I request the host to please take care of the disturbance which is going on in the. Okay, thank you. Now, what I'm talking about is the empathy. As a teacher, or if you are in the position of anything, let's say if you are the coordinator of any committee, if you are, let's say, the director of any company, if you doesn't have this within you, you'll not find any success in your business, in your like committee, or in anywhere as a teacher also. So empathy is very much important. You need to be connected with your student. You need to try to solve their personal problems, personal or let's say academic problems, and to listen to them, right? And give the proper, or you can say the response what is required to the student.
If you cannot solve the problem, at least you say that, yes, we'll see to those problems to be solved, right? Or I'll talk to the higher authority, or I'll talk to anyone, right, who are troubling you. So these all these points or all these words will really going to help. Sixth is the problem solving skill. See, if you have a thorough subject knowledge, you can definitely solve the problems related to your subjects. Time management is the skill that is very much important as a teacher. You should follow some of the time management technique. In later section of my class, I'll let you know the 3 methods that of time management that you can adopt any of these. Assessment and evaluation, that how you are assessing, how you are evaluating the student, that skill set you should have. You should not have be more strict or more lenient during the assessment or the evaluation. Otherwise, the deserving candidate you cannot make the justice to the deserving candidate. Ninth point is what I am saying is, in today's world, it is very much important in technology integration in your teaching. How you are integrating the technology is very much important, because we have those tools and techniques with us. We just have to use it. It will make your things easy. It will give more efficiency to your work, right? The technology integration. The last thing that we need to acquire is how good the team member we are, how good we are collaborating with others. So the collaboration and teamwork is also a very much important skill a teacher should have in today's world, because without collaboration, it's very difficult to cope up with today's generation teachers who are actually a very good team work and doing a very good team, what you can say, team member, and used to collaborate with others, right? So I'll say that these skills are very much important as a teacher, as a faculty, we should acquire. Now, let us go and try to enhance any of these skills that we have. See, if we'll talk about what are the thing that we need to enhance here in this 10 points. So direct and indirect skill that we need to adopt by enhancing ourselves. Adaptability, yeah, we should adopt the changes. Classroom management, I'll let you know different tools regarding that. Subject knowledge, it is all up to you. Empathy, it is all inner way you need to enhance. Problem solving skill, if you have the good subject knowledge, you will find out how we are solving the problem related to the subject, as well as if you have good what we can say amount of empathy, you can also try to solve the personal problems of the students. Time management, I'll let you know the different techniques of time management. Assessment and evaluation, we doesn't have to teach to any teacher. They need to adopt their way of evaluation or assessment. Technology integration, I'll let you know about that. Collaboration and teamwork, we have some tools and techniques which will help you.
But it is again to leave your ego aside and be the part of the team to grow, right? So that is something that I want to tell in this particular part of the skill development session. Now let's talk about again in NEP 2020 when we are implementing it. So with those skills that we have, how the teachers will be beneficial, will get the benefit related to the skill enhancement of the technology. So here we are talking about that particular part. Okay, because I don't want to make everything theory. You also get bored after some time, and I also will not get uh, like satisfaction of I have taught you something, or we have gained some knowledge about it, right? So I am going to tell you some of the technology that as a teacher I have adopted, and these technology will really help you for acquiring your own, or to making your like teaching and research activity more efficient. Okay. Okay, so as a teacher, we should know that from where I can get some, I can take the help of different platform. So there are different platform that we'll talk about. We'll also talk about different tools that will help you. So one is, which I find it out, like the MOOC platform that we have, and it is recommended by Government of India, which is SWAYAM platform. You all have the knowledge about it. In the SWAYAM platform, it is integration of all different MOOC platform, as you can see, AICT, CEC, IGNOU, IIM Bangalore, then we have INI, NCRT, NIOS, NETER, NPTEL, UGC. So all these agencies are integrated together, and Government of India, Ministry of Education has taken the initiative for giving one platform for and integrating all those platform in one platform. Okay. Now here we can acquire the knowledge as a teacher, as well as a teacher, we can recommend the student to go through any course which is very good in here, because the people who are teaching here are very big shots, right? And they belongs to very good reputed institute, and the way of teaching, how they are putting the assignments, the test and all is very much good. As well as NEP says that we need to integrate the MOOC courses in our curriculum. That is very much essential in it. So we should know, or we should have the knowledge about those platform, then only we can tell our student, or we can suggest our student to go through those. So this is by Government of India. We have many other MOOC platform which are run by different private companies like Coursera, Udemy, right? And these MOOC platform is having different courses which will help you and your students to learn a good thing from here, right? So this is one platform that you should have the knowledge. Then we have Diksha.
is a digital infrastructure for knowledge sharing, offering teacher, student, and parent engaged learning material relevant to the curriculum. This is also a good platform. And this is mainly for school. Here we have NCERT, CBSE, and this National Institute of Open School State. There are different state board. State board have also given their curriculum here, as you can see. So the student can explore any of these, right? It's very good platform. You can recommend uh, to your known ones who are in the schools. So this is for school and this is for the higher education, as we all know. In short, we are going to see some of the tools also. Before that, National Digital Library of India, I think every institute is connected with NDLI, which is National Digital Library of India. It is controlled by IIT Kharagpur. Here we'll find out again different courses, different books, resources, everything is there in the form of journals also. For school, higher education, for the research, career development, cultural archives is there, newspaper archive is there. So see, it is again integration of many other platforms together. As you can see, we have with one platform that has been recently has been added to the higher education. As you can see, there are many other things that we can go from here, right? And as a teacher, we need to explore or we need to use those platform which is already been given to us by Ministry of Education. Then again, there is a e-Pathshala, e-PG Pathshala. It is for the PG students, dedicated for the PG students. So as a teacher, we should have the knowledge of all those platforms that we have. Okay. See, they are talking about the uploaded courses that they have in different subjects, different departments. Okay, now let us slowly go to the hands-on. So we'll just go and try to explore all those things one by one. And as a teacher, I am using it. You may or may not be using it right now, but here in this particular session, we are going to see that how it is working, how as a teacher we are
get some benefit out of it. Okay. So let's go one by one and try to explore. Okay, so first thing is सभी के पास Gmail account है. That I am assuming that everybody should have a Gmail account, right? If you can respond me in the chat box, it will be very good. Through the chat, you can respond me. Okay, great. I got the response here from Pawan ji. Rita, very good, very good. So everybody is using Gmail right now. Very good. So everybody is having the Gmail account. Now we are trying to explore some of the G apps, Google apps, which is really helping us in our teaching activity. And after that, we'll go through the research tools also. So let's see, if you'll open the window in the Chrome, you'll find out these type of window. Okay, and where you have logged in any of the account, you have these 9 dots. You have this email Gmail link, right? So when you click it here, there's Google Apps. When you click it here, you will find out many applications which are listed here. Okay, so they have added some different applications. Now I am going to tell you some of the applications which are very much helpful. So the first application that we'll see here is the Google Drive. So for storing anything, we have different ways how we can store any object. Now Google are giving us a space which is called object storage. Okay, so any of the object we can store it here. So let me open let me open a drive. Now, how you can open a drive? You all might have used it. Yes. So if somebody will say that they have used the Google Drive, yes or no? Yes, sir. Okay. Whatever. Okay. I want the I want the response in a chat. Chat में आप थोड़ा respond करेंगे तो अच्छा रहेगा. Almost सभी लोग I think Google Drive use करते होंगे, right? Very good. So Google Drive हम लोग क्यों use करते हैं and what is this Google Drive is? Now Google Drive is the object storage area that is given by Google. In here we can store different objects. Okay. Now object अगर क्या बोलें in digital word, whatever you can see, your video, audio, text file, your PPT, your PDF file, your email, everything is nothing but the object. So it will give you the space where you can put your objects. Now it is again a cloud-based storage. Okay, it is a cloud-based storage. Cloud क्या होता है? Cloud is a computing facility which is there somewhere remotely,
and a user will use those things through the internet. इंटरनेट के जरिए कोई यूजर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को यूज करता है, ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसको बोलते हैं क्लाउड। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम गूगल की एक फैसिलिटी को, दैट फैसिलिटी इज टू स्टोर समथिंग, वी आर यूजिंग इट। ठीक, अभी इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग फाइल या फोल्डर स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। फाइल और फोल्डर को हम क्या करेंगे स्टोर करके, तो हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये हमारा गूगल ड्राइव खुला, तो गूगल ड्राइव के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल ड्राइव और उसको गूगल कीजिए। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन गो टू द गूगल ड्राइव अकाउंट, और कोई भी आप एक नया विंडो खोलेंगे, नया विंडो खोलने पर आपको, अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे तो आपका अकाउंट दिखेगा, and you will see the 9 dots here. If you click into the 9 dots, you will find out the application which is called Drive. If you click into that, you will come here in this particular page where you will find out Drive written and new is written and home and other things are written. हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को यहाँ पर स्टोर करने के लिए, सो विल गो टू द न्यू, और न्यू में आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस, यू कैन क्रिएट द न्यू फोल्डर, यू कैन डू द फाइल अपलोड, और यू कैन डायरेक्टली अपलोड एनी ऑफ द फोल्डर। ठीक है, ये तीन आपके पास हैं चीजें करने के। चलिए हम न्यू करते हैं, न्यू जाते हैं यहाँ पर, तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं, दैट इज NEP orientation 2024 Nagpur, and I'll create a folder. ये फोल्डर को हम क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारा फोल्डर तैयार हो गया है। Okay, so this is my folder. In this folder, if I'll enter in this, तो अभी कोई फाइल नहीं है इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, I'll upload my PPT। तो मैं अभी अपने PPT को अपलोड करूंगा, उसके लिए फाइल अपलोड में जाऊंगा, द सेकंड ऑप्शन, तो अपलोड अ फाइल। Okay, let us go to the place where my PPT is. Okay, this is my PPT. I am taking the PDF of it and I am opening it. Now this PDF is uploading here, as you can see. Okay, now done. The uploading is done, and now this PPT is here in the form of PDF. अभी मैं इसका क्या करूं, so as a teacher I can share it with my students, right? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, we'll go to this place। यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर का ऑप्शन है, this is a share option, right? If you click into the share option, you will get some other options how you want to share it, right? So either we can share with one people or we can share it many people, right? अगर आपको एक के साथ शेयर करना है, so you have to put the email ID of that particular person to whom you want to share, okay? And the role that you have to define, whether that person can only view, that person can do comments related to that particular file, or they can edit it. Edit means they can able to delete or they can do some changes on it, right? So अगर आप चाहें तो ये सब राइट दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप एक के साथ नहीं बहुत सारे लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, then you have to go for this option
which says that you will provide a link and it will be used by anyone. So the second option will give you a link. You'll copy this link, but you should make sure that which type of privilege that you are giving to anyone who can have this particular link. So whether you want to make it viewer, commenter, or editor, right? So it is better to make it a viewer. It can view and it can have this it can have this PPT, right? So now what I'll do is I'll just share this particular PPT with you people. What you can do is by clicking the link, if you have the Gmail account, you can open it and you can download it very easily. So this is one way that you can share everything to your students. Whatever you have made, you have created the coursework that you can share with your students. Yeah. So this is a very good thing that you can do here. Also, you can download whatever you are putting in the Google. अभी देखिए क्या होता है, कुछ भी फाइल्स या कुछ भी चीजें अगर हमको स्टोर करनी है, सो हमारे पास पेन ड्राइव्स हैं, राइट? बट पेन ड्राइव इज अभी तो सीडी ड्राइव हम लोग यूज नहीं करते, वी फ्रिक्वेंटली यूज पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव. अगर पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, देन डेफिनेटली दोज फाइल्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल विद. बट इन द केस ऑफ दिस गूगल ड्राइव, ये अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, यू हैव द स्मार्टफोन, यू हैव द मोबाइल फोन आपके पास है, इट मीन्स दैट यू हैव द इंटरनेट फैसिलिटी. आप कहीं भी जा रहे हैं, यू कैन यूज योर यूजर एंड पासवर्ड एंड गेट योर डेटा फ्रॉम दिस. So it is a very good place where you can store your data, and the Google provide you 15 GB of free data storage here. This 15 GB is included in your email also. So when you create an email account or you create any Gmail account, the mail has also been created and the 15 GB is also shared with your emails, right? So आपको make sure करना है कि do not put the unnecessary things here and use it properly. Okay, so I think you understood the use of the Google Drive. Many of you are using it, the Google Drive. It is very good. Many of you who are not using it, it is for them. So this you can use it for your for your or giving your everything to your student, right? चलिए अभी दूसरे में आ जाइए. दूसरा चीज जो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखिए क्या होता है, हमारे पास विंडोज ऑफिस है नहीं है हमारे सिस्टम में, इट डिपेंड्स, राइट? लाइसेंस वर्जन है नहीं है, इट डिपेंड्स. बट गूगल हमें ऑफिस जैसा काफी सारा एप्लीकेशन ऑलरेडी फ्री में दिया हुआ है, दैट वी आर एक्सप्लोरिंग इट. सो वी हैव 2-3 things which are alike to the Microsoft Office. पहला चीज उसमें है, अगर मैं फिर से गूगल ऐप खोलूं यहाँ पर, तो आपको पहला चीज मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड गूगल डॉक. ठीक है, ये है गूगल डॉक. ये गूगल डॉक कैसा दिखता है? इट इज लुकिंग लाइक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर आपके पास वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके सिस्टम में, देन इट इज वेल एंड गुड. बट हियर व्हाट आर द अदर थिंग दैट अ गूगल डॉक वुड हैव? ये एक तरीका है गूगल डॉक खोलने का. आप गूगल ऐप में क्लिक कीजिए और आप
सर्च कीजिए कहाँ पर गूगल डॉक एप्लीकेशन है, आप इसको क्लिक कीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप अगर ड्राइव में हैं अपने, सो न्यू में जाएंगे आप, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज गूगल डॉक। अभी जब गूगल डॉक को क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। व्हाट आर दो टू ऑप्शंस? ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम द टेम्पलेट। ओके, सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने से आपको एक ब्लैंक पेज जैसा गूगल ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में खुलता है वैसा खुलेगा। अगर आप फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वो दे देगा। ओके, इट विल गिव यू डिफरेंट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब आपको क्या बनाने हैं उस तरीके से आप कुछ टेम्पलेट चूज किए। आपको लेटर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, बिजनेस कैरेक्टर बनाना है, राइट? व्हाट आर द अदर ऑप्शन? कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है, राइट? मीटिंग नोट्स बनाना है। सो एवरीथिंग दैट इज हियर दैट यू कैन मेक। ठीक है, चलिए मीटिंग नोट्स में अगर क्लिक करते हैं तो हमको एक टेम्पलेट जो है वो बना बनाया हमारा मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट वी कैन एडिट इट, हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल बोर्ड मीटिंग, राइट? I can change it to some other thing. Let's say if I'll say I have conducted an NRF meeting towards 2025. Okay. Okay. When I have conducted, let's say I have some date that I have conducted. So I'll put the date here. Address and all, attendees. ठीक है, तो आप ये सब चेंज करके अपने हिसाब से आप अपना बना सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट आर द थिंग दैट इज हियर? जो भी आप चीज आप यहाँ पर लिखोगे, इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली सेव इन योर गूगल ड्राइव। यू डजंट हैव टू बॉदर अबाउट सेविंग इट। कभी कभार क्या होता है, हम लिखते जाते हैं बट हम सेव नहीं कर पाते, और हमारा सिस्टम अगर पावर चला गया या कुछ लाइट चला गया, कुछ होता है इस तरह से, तो हमारा फाइल जो है वो चला जाता है। बट यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर लिखेंगे दैट विल बी रिमेन हियर। सो आई विल से दैट इट इज, मैं इसका रीनेम कर लूंगा यहाँ से, NRF मीटिंग। ओके, सो इट इज गोइंग टू सेव इट हियर। नाउ द नेम इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अभी हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे, जो हमने नाम दिया है दैट नेम शुड कम हियर, बिकॉज वी हैव चेंज द नेम टू NRF मीटिंग। ये आ गया, चेंज हो गया, राइट? नाउ व्हाट आर द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पर तो भी लिख सकते हैं थ्रू द टूल्स। अभी टूल्स है हमारे पास, द टूल विल गोइंग टू एक्सप्लोर क्या क्या कर सकता है ये टूल्स। टूल्स को अगर आप क्लिक करेंगे, देयर आर मेनी टूल्स दैट विल कम। वन टूल दैट आई फाइल वेरी गुड इज ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट कॉपी ऑफ NRF मीटिंग। आई विल चूज द लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना है। जैसे सी, मुझे यहाँ पर sometime I need to change my thing to Hindi. Okay. So what I'll do is I'll just translate this particular file to the language Hindi. So मैंने क्या किया? I went to the tool and I have selected the translate. In translate, I have selected the language and it is changing everything to Hindi, right? अगर आपको हिंदी में लिखना है तब। दूसरा चीज और दूसरा टूल यहाँ पर काफी अच्छा है, दैट आई हैव फाइंड इट वेरी गुड। ओके, सो आई एम पुटिंग माय video to off mode. Okay, so you can just listen to
you are going to you cannot see me right now because I want to give more load to the internet. That's why. What where to find translator option? Repeat. Okay, I'll repeat it again. Now, आप कोई भी फाइल में हैं, आप टूल्स में जाइए, go to the tools here, then you will find out translate document. आप यहाँ पर अगर आ जाएं, ये देखिए translate document. When you click into the translate document, you have to choose the language, in which language you want to translate. तो वहां पर आपको हिंदी मिल जाएगा, या और भी हमारी क्षेत्रीय भाषा भी है, उसमें भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। सो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा किसका, गूगल डॉक का, वो मैं आपको बताता हूँ। टूल्स में आप फिर से जाइए, आपको यहाँ पर मिलेगा वॉइस टाइपिंग। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिक्टेट ऑप्शन में भी मिलता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास तो एक डिक्टेशन ऑप्शन आता है, वहां भी आप डिक्टेट कर सकते हैं। मतलब जो आप बोलेंगे दैट विल यू कैन राइट इट हियर। तो आई चूज दिस वॉइस टाइपिंग हियर। ठीक है, and I'll click it here. So whatever I am talking, it is converting into a text. So this is how this voice typing is going to work of Google Doc. And this voice typing, let me tell you, it is very much efficient. बहुत अच्छा efficient way पे ये टाइपिंग करता है। ठीक है, यही वॉइस टाइपिंग को हम यहाँ पर हिंदी में भी कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। आप हिंदी वाले फाइल में हैं अभी, राइट? टूल्स में जाइए, वॉइस टाइपिंग में जाइए। अब यहाँ पर जो भी आप हिंदी में बोलेंगे, ये टूल उसे हिंदी में टाइप करता जाए। ये काफी अच्छा टूल है जो कि आपके आवाज को अक्षरों में बदलता जाए। राइट, सो अगर आप हिंदी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, यू से इट इन हिंदी। इफ यू आर क्रिएटिंग व्हाट इंग्लिश डॉक्यूमेंट, यू से इट इन इंग्लिश। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही लिखता जाएगा, in the same way which we are using in our WhatsApp and all, right? So ये बहुत अच्छा तरीका है। You can later on you can do the corrections, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पेस होना चाहिए, है ना, तो आप बाद में कर सकते हैं कुछ चेंजेस, राइट? बट ये मोटा मोटी इट इज a very good tool. Any document that you want to download, आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फाइल में जाइए and here you can use download. डाउनलोड में क्या क्या ऑप्शन है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड .dox फॉर्म में, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट, PDF फॉर्मेट, एनी ऑफ द फॉर्मेट वी कैन यूज टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो जैसे ही हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा चीज, इफ यू वांट टू शेयर इट, आपके पास यहीं पर ऑप्शन है शेयर करने का। मैंने बताया था शेयर करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी एक को भेज सकते हैं बाय पुटिंग इट्स ईमेल आईडी, या तो आप क्या कीजिए, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, एनीवन विद द लिंक। अब इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, और क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके फाइल को कोई चेंज करे तो व्यूअर ही रखिए। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके फाइल को चेंज करे या कोलैबोरेट करे आपके साथ, तो यू कैन मेक इट एडिटर। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में आप
किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, यू कैन शेयर द लिंक। जैसे मैंने अभी आपको अपने पीडीएफ का लिंक शेयर किया था, सो दैट यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर पीपीटी, राइट। सो दिस इज वन थिंग। एक काम करते हैं, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 minutes and will come again. It will be good to all. 10 मिनट का ब्रेक ले लें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर आते हैं एंड विल सी सम मोर टूल्स रिलेटेड टू टीचिंग, उसके बाद फिर रिसर्च में जाएंगे क्विकली। ठीक है, थैंक यू।
Okay, welcome back. Uh, all of you are here. Yes, sir. Yes, Great. sir. Great. So this is one thing, right? And you can take a use of it. आपको जैसा यूज करना है आप वैसे इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट इज वेरी मच हेल्पफुल. Just a minute. Okay, sorry for the interruption. So we'll start from here. Different tools we have to see. We'll see one by one. If you have any doubt, you just ask me in your chat box. So I'll try to answer those questions. और फिर लास्ट में हम लोग फिर इंटरेक्ट करेंगे. विल इंटरेक्टेड. फिर आपका भी कुछ और टूल्स होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं वो भी हम शेयर करेंगे. सो ये तो हो गया. आपका गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक हो गया, है ना. ये दोनों अच्छे टूल्स हैं इन द सेंस कि आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हैं. फिर एक और टूल की अगर बात करें दैट इज रिलेटेड टू योर पीपीटी, राइट. पीपीटी प्रिपरेशन. सो उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं गूगल ऐप में. गूगल ऐप में अगर आप क्लिक करेंगे सो यू जस्ट फाइंड आउट द गूगल स्लाइड. तो स्लाइड्स जो हैं वो आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है उसके जैसा ही काम करेगा. तो आप यहाँ से जा सकते हैं, या तो आप पावर पॉइंट लिख सकते हैं गूगल पावर पॉइंट, सॉरी स्लाइड्स लिख सकते हैं, या तो न्यू में जाके यहाँ पर आप स्लाइड में जा सकते हैं, राइट. सो इसके लिए भी सेम है, या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लें या तो टेम्पलेट खोल लें. सो टेम्पलेट खोलना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टेम्पलेट ऑलरेडी आपको कुछ टेम्पलेट बना के देता है. उसको आप अपने हिसाब से यू कैन मेक द चेंजेस. ठीक है. ओके. So I'll choose any of the template here. Okay, आप देख पाएंगे कि it will look like your Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint के जैसा आपको दिखेगा. आप उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में जा सकते हैं, अलग अलग स्लाइड्स बना सकते हैं.
आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसा ही टूल यहाँ भी आपको मिल जाएगा डिक्टेशन के लिए। जो भी आप बोलेंगे आपको सुनेगा और लिखता जाएगा। ठीक है। डाउनलोड करने के लिए अगेन फाइल में जा सकते हैं आप। फाइल में एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, जिसमें इतने सारे फॉर्म में आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लेआउट, थीम, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड, ये बहुत सारी इसमें अच्छे अच्छे वो बन जाते हैं, स्लाइड्स बन जाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। यू कैन क्रिएट योर स्लाइड्स फॉर योर लेक्चर। ठीक है, आपके लेक्चर के लिए आप आराम से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्लाइड्स बना सकते हैं। अगेन फॉर शेयरिंग वी हैव दिस ऑप्शन, या अगर आपका फाइल बन जाएगा देन यू कैन ऑल्सो, देखो ये फाइल बन गया ऑलरेडी आपका, तो आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पावरपॉइंट स्लाइड। अभी आपका एक एक्सेल जो हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वैसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा शीट, गूगल शीट। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, या यहाँ पर आप न्यू में जाइए एंड गो टू द गूगल शीट। गूगल शीट क्यों यूज़ करते हैं? मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं बच्चों के अटेंडेंस, उनके मार्किंग वगैरह के लिए आई यूज टू हैव इट, और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें हम एक्सेल और ये स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइड्स में भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो आप उसके हिसाब से कोई सा भी टेम्पलेट आप यहाँ से उठा लीजिए, आपको जिस तरह के टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप अपने अनुसार फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा एक एक्सेल शीट बना हुआ है। इट इज शोइंग विद द गैंट चार्ट दैट हाउ वी कैन प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड ऑन द डेज। मेरे ख्याल से ये हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, हर हफ्ते का क्या क्या शेड्यूल है, कैसा है। एक एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है ये। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। आपके अटेंडेंस के लिए, मार्किंग के लिए भी अच्छा खासा टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक है जहाँ पर आप काफ़ी सारे टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव अ वेरी गुड टूल here that is called class, that is called Google Form, class कितने टाइम 6। so this is Google Form, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, and also you can go from new to Google Form it here। देखिए गूगल फॉर्म का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका है कि या तो हम किसी चीज के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म का यूज करते हैं, या दूसरा अगर हम किसी तरीके का क्विज तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा कि हाउ वी कैन क्रिएट द क्विज फॉर द स्टूडेंट्स एंड हाउ यू कैन create the form for collecting the data। So पहले चलते हैं how you can create a form for collecting the data। ठीक है, तो हम टेम्पलेट से ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कोई इवेंट करा रहे हैं आप, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव दिस ऑप्शन, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो आप मान लीजिए एक इवेंट करा रहे हैं,
and that event is NEP orientation. तो आप यहाँ पर लिखिए registration Okay, sorry for that. The connection was lost due to ओके। सो हम थे फॉर्म में, गूगल फॉर्म किस तरह से यूज किया जाता है, तो वो हम देख रहे थे। सो वी वी हैव टेकन अ टेम्पलेट। हम एक टेम्पलेट लिए, कहाँ से लिए? तो हम गए फॉर्म के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन है, गूगल फॉर्म, गूगल क्विज एंड फ्रॉम टेम्पलेट। हमने क्लिक किया फ्रॉम टेम्पलेट को और वहां से हमने एक टेम्पलेट उठा लिया। अब उसका रीनेम करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर NEP 2020 ओरिएंटेशन। ठीक है, तो लेट्स से इसी को हम हेडिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया हेडिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर NEP 2020 रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर NEP 2020 ओरिएंटेशन। ओके, तो इवेंट का टाइमिंग वगैरह आप दे दीजिए यहाँ पर। ओके, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वगैरह यू कैन मॉडिफाई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए हमको? मान लीजिए पार्टिसिपेंट्स का नाम चाहिए। आई वांट द ईमेल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। एम आई क्लियर? मतलब मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? बिकॉज आई हैव कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क। ठीक है ना? यस सर। ओके ओके, जब भी डिस्टरबेंस होगा प्लीज इंटरप्ट करेंगे मुझे। नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मुझे चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दैट ऑल शुड अटेंड। ठीक है, ओके, ऑर्गेनाइज कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैं ऑर्गेनाइजेशन का कर लेता हूँ, इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई वांट द आंसर इन अ शॉर्ट फॉर्म। इंस्टीट्यूट हो गया। व्हाट एल्स आई वांट? नेम, ईमेल, इंस्टीट्यूट। मुझे और भी डिटेल चाहिए, लाइक आई वांट फोन नंबर। सो फोन नंबर, ठीक, ईमेल आईडी, फोन नंबर हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। ओके, नेम के बाद आई नीड
ओके, और द इंस्टीट्यूट से पहले आई नीड द डेजिग्नेशन. Designation. I know that NEP orientation is for the faculty member, and I know that faculty member has, let's say, 3 categories. So मैं drop down बना दूंगा. इस ऑप्शन 1 में रखूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर. फिर हो जाएगा हमारा associate professor, and the last one is the professor. Okay? तो ये हमारा ड्रॉप डाउन में आ जाएगा. इंस्टीट्यूट, what else, और कुछ चाहिए अपने को? मान लीजिए हमको चाहिए इंस्टीट्यूट के बाद हमको चाहिए एड्रेस. एड्रेस चाहिए अपने को. मान लीजिए एक पैराग्राफ में एड्रेस को दे देगा. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फील्ड. तो जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है आप रिक्वायर्ड लिखिएगा. मान लीजिए मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है. मान लीजिए फोन नंबर मैं चाहता हूँ कि दैट शुड बी वैलिड, सो आई शुड मेक इट रिक्वायर्ड. और यहाँ पर ये जो 3 बिंदु दिख रही है इसको अगर क्लिक करते हैं तो आई कैन मेक इट द वैलिडेशन ऑफ द रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो व्हाट आई वांट हियर इज द फोन नंबर. आई वांट नंबर. सेकेंड थिंग इज आई वांट द नंबर इन बिटवीन सम नंबर्स, राइट. सो हमें पता है कि आजकल मोबाइल नंबर 6 से भी स्टार्ट हो रहा है, राइट. सो अगर 6 से स्टार्ट होता है so it will start from 000 maybe. So I'll have the option of 6, 9 times 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and the number should be up to 999, right. So 9 10 times 9 I will put 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is my validation of the phone number. अगर मुझे 10 डिजिट का फोन नंबर 6 से स्टार्ट वाला अप टू 9 मिलता है, देन ओनली आई कैन टेक इट. अदरवाइज आई विल से दैट प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर, राइट. प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर. दैट इज माई व्हाट एरर मैसेज. वैसे ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल आपका एक ईमेल फॉर्म में होना चाहिए, राइट. अगर नहीं होता है इसको भी मैं रिस्पॉन्ड को वैलिडेट करेंगे किससे. प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी. ठीक है. इस तरह से हमारा एक फॉर्म तैयार हो गया. अब ये फॉर्म को मैं क्या करूंगा, लिंक दूंगा किसको, सभी को जो हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में रजिस्टर होना चाहते. ठीक है. तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे हम. यहाँ पर आ जाइए. दैट इज द थर्ड ऑप्शन, गेट प्री फिल्ड लिंक. यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे देयर इज अ लिंक, सो आई विल क्लिक टू गेट द लिंक. अब मैं कॉपी कर लूंगा लिंक को. कॉपी द लिंक. अब आपको मैं ये लिंक जो है वो दे देता हूँ, सो दैट यू ऑल ओपन इट एंड यू कैन फिल इट. आप फिल कर सकते हैं. आप में से आप लोग फिल कीजिए. देयर इज नथिंग मच रिक्वायर्ड. तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, नाम. सो आई विल जस्ट पुट द नेम. अच्छा, मैंने अभी लिंक दिया आपको, राइट. तो उसी लिंक का यूज करके मैं भी फिल आउट करूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्म को. ओके, I'll put my name, my email ID, my phone number. अभी देखिए मैंने फोन नंबर जो है 9 डिजिट के बजाय
सॉरी 10 डिजिट को 9 डिजिट दिया है एज यू कैन सी। जैसे ही मैं दूसरे तक जाऊंगा तो वो वैलिडेट करेगा, लिख रहा है प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर। उसको पता चल गया दैट आई हैवंट एंटर द वैलिड फोन नंबर एंड द वैलिडिटी आई हैव गिवन, सो आई हैव टू पुट डिजिट हियर। डेजिग्नेशन में चूज कर लूंगा, व्हाट इज माय डेजिग्नेशन, institute, again I'll put my institute name and the address, okay, and I'll submit it. I hope मेरे साथ में आपने भी सबमिट किया होगा। अभी जितने भी लोगों ने सबमिट किया है, अच्छा आई थिंक मेरे ही है सबमिशन हुआ है, आप लोगों में से कोई और फिल कीजिए। Okay, I got another response. So आप देख रहे हैं I am getting the response of the people who have filled it, right? So मेरे इनाम के एक और सर हैं, सूरज के रोडे, and he has filled the form. ठीक है, हम दोनों ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वेरी गुड। सर भी अमरावती से हैं, वेरी गुड। सो आई गॉट दिस राइट। और कोई? तो दिस इज वन वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, राइट। एंड अगर हम इसको एक प्रॉपर वे पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सो वेयर वी कैन यूज इट एंड वी कैन पुट इट इनटू द एक्सेल शीट। कैसे? तो आप ये रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए, लिंक टू शीट कीजिए, and it is going to create a separate spreadsheet। कि मुझे अभी 4 रिस्पॉन्ड मिल गए हैं, राइट। स्प्रेडशीट एंड क्रिएट। सो अभी हमारे पास एक स्प्रेडशीट बन जाएगा with all the people with a heading, नाम, email ID, phone। तो आप देखिए this is in that particular way we can have the data। This is how we can do the survey sort of thing। Very good, I got 5 response। अब चलिए देखते हैं कि क्विज कैसे कर सकते हैं ना। क्विज, हाउ वी कैन क्रिएट द क्विज आउट ऑफ इट, क्योंकि उनको बच्चों के लिए sometime we need to create the quiz। So I got the response from Suraj sir, Chaya ma'am, then Pradanya ma'am से भी मिला, then Meenal ma'am, very good, Sachin Kumar B। I got the response from all these people। अभी हम again we'll use the form, but now we'll create the quiz। So चलिए फॉर्म में आ जाइए। फॉर्म में अगर हम क्विज में जाते हैं, we'll create the quiz here। Okay, very good। Now I'll create a quiz here। Okay, and for that I need to ask the question। So let's say the first question is what is what is the capital of Maharashtra? So let's say the option 1 is Mumbai, Nagpur, Pune, और कोई नाम बताइए, अमरावती, अमरावती के। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने ऑप्शन दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नाउ आई नीड टू पुट द आंसर की। सो आंसर क्लिक में
क्लिक करूंगा and let's say the capital of Maharashtra is, let's say, Mumbai. Is it? Is it? Yes or no? Respond कीजिए. Let's say, okay, I'll find out some more questions. MCQs. चलिए इसी से रिलेटेड कर लेते हैं. Okay, I'm just taking the questions and I'm just putting it. Which of the following is the cloud-based word processing application in Google Suite? तो हमने अभी word processing applications देखा है, right? These are the 4 options that I have. Let's say I'll put it one by one. Google Sheet, Google Slide, Google Doc, and Google Keep. So what is my answer? My answer is Google Doc. This is the correct answer. I'll make it done. Okay. अच्छा ये भी देखना है that whatever quiz I am putting वो कंपलसरी है क्या बच्चों का अटेंड करना. अगर कंपलसरी है तो मेक इट रिक्वायर्ड. अगर कंपलसरी नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सो you will not check into the required, right? So I'll put one more, this. What is the primary goal of Google Drive in Google Suite? Google Drive का क्या यूज है Google Suite में? So sending email, creating video, storing and sharing files. So let's see. The answer is storing and sharing the file. Done. So let's say we have these 3 questions, and यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सफल करने का. I can shuffle the answer, the way how this options will come. So to make it more like confusing to the student, I can make it shuffle. क्या होता है कि बच्चे 1 2 3 prompt कर लेते हैं. So I'll make it like shuffle of this. हमारे पास कुछ settings हैं अगर आप चाहें तो. Release grade immediately after each submission. So after submission या later हम grade देंगे. That we can find it out. Miss question, correct answer, point well, default. Response, अभी response में कैसे कर सकते हैं? Collect email, okay. Allow response to edit, क्योंकि ये question ये एक तरह का question paper है, so I'll not make it to edit. Limit to 1 response, yes, it should be limit to 1 response. Response will be required to sign in to the, okay. Limit to 1 response only किसी भी quiz के लिए. ओके, क्विज एक बार होने के बाद,
what we can do. Okay. हम सेंड भी कर सकते हैं क्विज को, या नहीं तो हमारे पास एक लिंक है, राइट? प्री गेट द प्री फिल्ड लिंक दैट वी कैन यूज. यहाँ पर हमको लिंक मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्विज का. गेट. Just a minute, there is something. Okay, let me change the network. मैं network change कर रहा हूँ. There is some problem with the network. Okay, let me use the send button. Okay, this is the link. I'll just copy the link. Okay, I want you to attempt this particular quiz. आप में से लिंक को क्लिक कीजिए and you start doing this. तो आपके साथ साथ मैं भी करता हूँ. Okay. स्कोर व्यू करना चाहते हैं तो स्कोर भी व्यू कर सकते हैं. So it is giving me the score, and it is also showing that whatever you have selected is correct, right? So आप में से कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड? वेरी गुड. एक ने रिस्पॉन्ड किया, 4 ने किया. वेरी गुड. सो अगर आप देखेंगे, अगर आप बच्चों का क्विज लेना चाहते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं. के ठीक है, राइट? सो अभी मुझे 4 रिस्पॉन्ड मिल गए हैं ऑलरेडी. ओके, 4 ही हैं अभी तक के. Okay, no problem. So we got this, right? How you can create the quiz. 5 response आ गया. Very good. Individual में जाके you can also see the performance of the individual person, right? इस तरह से individual आप कर सकते हैं, and also you can link all the responses to the sheet.
तो आपको एक गूगल शीट भी मिल जाएगा, और इस शीट को आप एज ए एक्सेल फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड इट आउट द डिटेल ऑफ दैट पर्सन. ओके, सो काफी को 6 मिला है, और सॉरी 3 मिला है मार्क्स. एक दो लोग जो हैं वो okay. Somebody says Nagpur is the capital. चलो अभी आते हैं हम लोग another tool में, that is called your class management tool, your learning management tool. Okay, and that tool is called Google Classroom. आप में से बहुत सारे फैकल्टी मेंबर ऑलरेडी गूगल क्लासरूम का यूज किए होंगे फॉर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस गूगल क्लासरूम टूल एंड हाउ इट इज यूजफुल. ओके, ग्रेट. सो गूगल क्लासरूम को हम यूज करने के लिए विल come to the Google Classroom, and we have this option of plus. This plus is going to do two things. Either you want to join the class or you want to create the class. अगर आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, so you have the options to make the class. So मैं ये क्लास बना रहा हूँ for you people. Can development NEP 2020 section. Okay, so I'll put some value, subject, skill development. Okay, room, let's say virtual. तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्लास क्रिएट. ठीक है. वंस यू क्रिएट द क्लास, आपका क्लास का नाम आ गया, फैकल्टी के लिए है इन दैट वे. अभी आप इस पर्टिकुलर क्लास में ऐड अप करने के लिए यू कैन ऐड द लिंक टू योर क्लास, टू योर स्टूडेंट लेट्स से ग्रुप. तो यहाँ पर जो क्लास कोड है वहाँ पर 3 डॉट्स हैं. इस 3 डॉट में क्लिक कीजिए. कॉपी क्लास लिंक, इनवाइट लिंक, ये आ जाएगा आपको. उसको कॉपी कीजिए and you can give to your students. So let's say if I am putting this particular link to you people, by clicking this, if you have the Gmail account, you can join this particular class. So click कीजिए उसमें so that you can be in this particular class. आप सभी क्लिक कीजिए. इसमें और चीज क्या हो सकता है? सो ये जो पहला टैब जो खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम. एज यू कैन सी, स्ट्रीम टैब. दूसरा टैब है क्लास वर्क. थर्ड इज द पीपल एंड द फोर्थ इज द ग्रेड. ठीक है. तो स्ट्रीम में जो भी आप, जैसे इट इज जस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड, एज वेल एज ऑल द एक्टिविटी दैट यू डू विल बी कमिंग हियर इन द स्ट्रीम. तो आप मान लीजिए कुछ नोटिस देना चाहते हैं बच्चों को, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं. यू कैन से दैट the class will start from 3 p.m. tomorrow, right? This is your announcement that you want to make, and you can post it. So all the people who are the part of this particular classroom will get this, right? अगर आप people में जाएंगे, so देखते हैं, एक मैम ने ज्वाइन कर लिया है, अलका मैम ने. I want all of you to join please so that we can understand it. उस लिंक को क्लिक कीजिए and you will come here.
सो ओके, मैं भी क्या करता हूँ, आई विल क्लिक दिस पर्टिकुलर लिंक सो दैट आई कैन ऑल्सो ज्वाइन इट हियर। ओके, एक ही है अभी। सो मैं खुद भी दूसरे अकाउंट से इस पर्टिकुलर क्लास को ज्वाइन कर लिया और मुझे भी ये दिख गया, क्या दिख गया, द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 3 PM टुमारो, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप पीपल में जाएंगे अगेन, तो माय नेम विल आल्सो कम हियर बिकॉज आई हैव आल्सो ज्वाइंड। ओके, ग्रेट, सो देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव ज्वाइंड। शिव शंकर सर, गजेंद्र सर हो गए, Pradanya, then Chaya ma'am, all have joined. Good. So now, ये तो हो गया आपका स्ट्रीम में। स्ट्रीम में आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो share the file. Let's say you want to share the syllabus, some sort of syllabus also, you can do it. Let's say the syllabus or the timetable you want to share. So यहाँ पर upload में जाके, so here you'll find out. Okay, so here you'll find out this upload file. By clicking it, you can upload the file also. Whatever file you want to upload, you can upload it. Second thing is the class work, as you can see. Okay. Uh, could you all see me? Sorry, could you all hear me? Yes. Okay, great, great. So ये सब हो गया आपका स्ट्रीम में, आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। देन देयर इज अ क्लास वर्क। क्लास वर्क में आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स यू कैन डू इन क्लास वर्क? In the class work you can create the assignment, you can create the quiz बनाना मैंने सिखाया था, you can give the answer questions, you can also post the material and you can repost what you have already been done with the topic wise। ठीक है, पीपल में आपके पास पीपल्स हैं, या आप चाहें तो कुछ टीचर्स को भी ऐड अप कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ग्रेड्स में आप बच्चों का ग्रेड्स देख सकते हैं, वॉट एवर क्विज यू हैव गिवन टू इट। सो आई जस्ट शो यू some of the classes that has been already been done previously। तो हमने कुछ क्लासेस किए थे previously that I'll just show you। So stream में, as I told you, in the stream whatever we are doing the activity, all are coming here। Let's say Dr. Sharma posted a new assignment, quiz 4, quiz 3, posted new material, all will come here, or whatever announcement I'll do, it is also coming here in the stream। ये तो हो गया एक पार्ट। क्लास वर्क में अगर आप जाएंगे तो आपने क्या क्या उन लोगों के साथ शेयर किया, क्या कुछ कोड क्विज शेयर किया है या कोर्स मटेरियल शेयर किया है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी। आई हैव फर्स्ट शेयर द सिलेबस in December
13. Then I have shared module 1. In the module 1, the topic is this, and inside that, these are the material that I have shared, right? So I have shared the PDF, the PPT with them. I have also shared bunch of video lecture with them, right, related to that topic. उसके बाद फिर एक और टॉपिक है, उसका आगे आपका पीपीटी और यूट्यूब वीडियोस. वैसे ही फर्स्ट यूनिट का पीपीटी एंड द वीडियो, राइट. अब आ जाइए सेकेंड यूनिट में. सेकेंड यूनिट में वैसे ही टॉपिक का पीपीटी. दिस इज द पीपीटी इन पीडीएफ वर्जन एंड देन वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस. So as you can see, I have shared module wise share, as well as I have shared the quiz test with them and different exams. Okay, the people, if you go to the people, the people are attached with it are the students. These are all the students who are attached with it. We'll go to the grades. आपको ग्रेड्स में हम लोगों के क्विज, जितने भी क्विज हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म जो हमने बनाया था, उसके थ्रू जितने भी क्विज लिए थे, उनके सभी के मार्किंग एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट इन द एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में आपके डाउनलोड हो जाएंगे. तो आप देख रहे होंगे क्विज 3 हमने लिया था, 2 हमने लिया था 15 मार्क्स का, मिड सेम एग्जाम हमने लिया था 30 मार्क्स का, क्विज 1 अगेन हमने लिया था 25 marks. So out of 25, what are the marks that they have received? So everything is visible and kept in one place, right? क्लास वर्क में जो ये एक और है, that is reuse post. इसका क्या है, जैसे आप एक ही सब्जेक्ट दोबारा ले रहे हैं, so you can use the material that you have already shared. Reuse post, ठीक है, that you can use. So all these things could be done in one platform, that is your Google Classroom. Okay, one more thing I'll share with the Google is the site. How you can create the site. Site means your website. See, as a faculty, we achieve many things. We may be the part of some of the organization. We may be the part of some of the society. We are regularly publishing the papers. We have resume, we have profile, we have different activities, like we are organizing some of the workshop, we are taking some of the lectures, we have been invited here in different places. So we need to highlight our activity. So what are the thing here in the Google that could be helpful for you? So you can use the Google site. Okay, Google site will help you for this. Okay, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ. जैसे I'll show you my site. This is my website. Okay, so I'll just put in the chat. This is my website. What I have done is I have created the website from the Google site only. I haven't used any code here. I just taken a template and I have created this website. So in the website, what I have showcased what is my current activity which is going on. All the webinar information that I have taken, and I have workshop or conferences that I have attended, right? Guest lecture that I have taken, right? Lab that I have,
research activity that I am doing, right? What else? Publications that I have. More में आप चले जाओ, that will get code and course material. Whatever course I have taken for that, all those information is there. अभी इसमें क्या क्या है? इसमें है देखिए course material है, जैसे AI and machine learning. YouTube link भी है that I have created the video lectures also. So all those things you can get it from my website. Okay. First page में अगर आप जाएंगे, you will get in home page. You will get my short profile. You will get my resume, and for the connection, you can go to the website or Google Scholar or LinkedIn or YouTube or Twitter or X, you can say. So you can reach to me by any means. और अगर आप website बनाते हो, so it will give you a good sense of outreach to the outer world. अगर मुझे कोई सर्च करता है with the name Dr. Suraj Sharma, if somebody will Google me, so they will give me my website address here. As you can see, all are the link related to my website. My LinkedIn profile is there. YouTube channel, as you can see, it is also there. X is also there, right? But you can find any person's information from his website, right? So you will get this particular website information. Now, let us see how you can create your own website. Okay? So for that, I have taken the domain. So this particular domain, which is co.in, you can also find from a Google account. From Google, you can get this domain also, co.in or related domain that if you want for your website, that also you can get. If you don't want to give any money to it, then also you can create your own website. Okay. So मेरी जो website है, that is in different Gmail accounts, so I'll just put that email account active. आप वहीं पर आ जाइए गूगल ऐप में, ठीक है? गूगल ऐप में जाने के बाद you can go to Google site. So this is sites, S-I-T-E-S, sites. If you'll click it here, so now you will get many template. अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे template हैं. अब इस template में से आपको जो template चाहिए, you can choose it. ठीक है? मेरी जो website है वो है ये. जब आप कोई से भी टेम्पलेट खोलेंगे, इस तरह से खुलेगा वो, और यहाँ पर आपको काफी सारे टूल्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? एक इंसर्ट है. इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, कोई लिंक इंसर्ट कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक इंसर्ट कर सकते हो. आप कंटेंट को किस तरह से अरेंज करना चाहते हो, ये टेम्पलेट है. टेबल ऑफ कंटेंट करना चाहते हो, इमेज और डिफरेंट इमेज जो है पास ऑन होगा इस तरह से बनाना चाहते हो, बटन बनाना चाहते हो, डिवाइडर बनाना चाहते हो. देयर आर मेनी थिंग दैट यू कैन पुट. पेजेस में आप चले जाइए. सो देयर आर मेनी पेजेस. इफ यू वांट टू ऐड मोर पेजेस, यू कैन ऐड इट. न्यू पेज, न्यू लिंक, पेज फुल एम्बेडेड, न्यू मेन्यू सेक्शन. सो आप किसी भी पेज के अंदर में कोई और पेज भी बना सकते हो. दैट इज अप टू यू. Themes में आप जाइए. There are different themes that you can use, different colors you can use, impression you can use. अपने चीजों को एडिट करने के बाद what you can do is come here, more में आप जाइए.
you can see the different version of it and see यहाँ पर आप share भी कर सकते हैं चीजों को and ultimately you can publish. ये जो publish का button है, that publish will tell that whatever changes you have done, you can now publish it to the outer world. ठीक है? You can publish it to the outer world. That you can do. Share में अगर आप जाएंगे, so it will give you the link of that particular website. उसको आप अपने मेल पे एज अ सिग्नेचर आप डाल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर ऑप्शन है एनीवन विद द लिंक और यू वांट टू मेक इट पब्लिक. सो बिकॉज ये वेबसाइट है, हम इसको पब्लिक करेंगे. एंड एनीवन विद द लिंक, कॉपी पब्लिश्ड साइट लिंक. अब ये जो लिंक है इसको मैं कहाँ डाल दूंगा? अपने ईमेल में सिग्नेचर में डाल दूंगा. तो जो जब भी मेरा ईमेल किसी को जाएगा, so it can also visit to my website. So ये अपना वेबसाइट खुल जाएगा. So this is one way of sharing your website. Or if you want to see जो भी मैं changes इस particular website में करूँगा, जो आपने देखा, it is going to reflect here also because it is fully connected with this. यहाँ जो भी मैंने changes करूँगा, that will come here. So जो भी changes करना है, it is very easy to change and it is very easy to reflect. बहुत easy से reflect हो जाएगा और बहुत easy से change भी हो जाएगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको प्रीव्यू जो है वो कैसे दिखेगा, कैसे देख सकते हो आप. आपके डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, अगर आपके पास टैबलेट है तो कैसे दिखेगा, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपका वेबसाइट कैसे दिखेगा. सो इन दैट वे you can change whatever you want to change in your website to look it good. Okay, so this is another thing that I want to tell you about. हमारे पास अभी half an hour है. Now we'll go to the research part of it and we'll see some of the tools which will help you in your research activity. जब भी हम रिसर्च करते हैं, सो पहला जो फेज होता है रिसर्च का, दैट कम्स related to literature review. We do the literature review and after the literature review we decide that what are the problem statement and in that area that we need to look after. Okay, so for finding out the good research paper, we have some tools and techniques. So first tool that will find it out is the Google Scholar. So हम जानते हैं कि there are so many publishers publishing institutions which are publishing the good research papers, but Google Scholar is what you can say it is an archive of all those things together. Now हमको अगर कुछ चीजें सर्च करनी है, मान लो मुझे सर्च करनी है एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मान लो मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स चेक करना है एंड आई नीड टू चेक द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी से रिलेटेड मुझे पेपर्स चाहिए. So it is giving me the papers which are related to Internet of Things. It is okay. Now मुझे कब से ये पेपर दे रहा है? So it is giving me the paper from the lifetime. Now I don't want from the paper from the lifetime. I want, let's say, a specific range. I want, let's say, from 22 to 2024. So I want the latest enhancement in that particular research. So I can change the
what range to it, right? Short by relevance, short by date, it depend upon you what you want to do. Review article चाहिए नहीं चाहिए, any type, it will work. Now you will see the paper. First of all, which paper you will go through, because you cannot go through each and every paper, right, for your literature review. So you will go through those papers which are reliable. How you'll find out a paper is reliable? So there is a attribute which is called citation. Means how many researchers has already cited this particular paper for writing their own research paper, right? So if the citation is good, it means that the paper is reliable. That's why we see the citation of that particular paper. If citation is very good, I'll try to read those paper. Otherwise, I'll try to ignore that paper. Okay? Next thing is from where you'll get the paper. So you'll get that particular link. This link will take you to the source of that particular paper from where you can download those papers. This is, you can say, a type of technique that will apply by doing the literature search. अभी हम टूल का यूज कर लेते हैं, कुछ टूल है हमारे पास, उसका यूज कर लेते हैं फॉर द लिटरेचर review or literature review process. So I'll talk about these 4 tools. So the first tool is called Paper Digest. इसका link है Paper Digest का. I'll just put it here. And also I am putting in the chat box so that you all will have the link. अभी हम आ गए इस पर्टिकुलर पेपर डाइजेस्ट टूल के अंदर. ये अगर क्लाउड बेस्ड टूल है जिसमें हम अभी लिटरेचर सर्वे में जा रहे हैं, एंड आई एम राइटिंग अ ब्रॉड प्रॉब्लम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, ओके, एंड आई जस्ट सर्च फॉर इट. जब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, so as you can see, you will find it is going to give me 10 paper, and if you'll see, all the paper are general paper and all the paper are from good publisher. तो अगर हमको अच्छे publisher के paper find out करना है, this is the way. देखो सभी का impact factor दिया हुआ है, सभी 3-4 impact factor वाले हैं, और सभी जो पेपर्स हैं वो अच्छे जगह पे पब्लिश हुए हैं, राइट. 10 पेपर देने के बाद इसने क्या किया, इसने एक रिव्यू भी निकाला उन 10 पेपर्स के विद द प्रॉपर साइटेशन दिया हुआ है, प्रॉपर साइट करके उसने टेक्स्ट भी निकाल दिया. ठीक, अब आप क्या करो, इस पेपर को कॉपी करो और इस टेक्स्ट को कॉपी करो, यू पुट इट in a place. आप कहीं एक प्लेस पे जस्ट पुट इट, एक बार रख लीजिए. ये हो गया आपके पेपर्स और ये हो गए आपके रिव्यूज ऑफ दोस पेपर. ठीक है, अभी आप आ जाइए फिर से यहाँ पर, एंड यहाँ पर ऑल के जगह में पास्ट 5 ईयर को आप क्लिक कीजिए एंड सर्च फॉर इट. अभी आपको क्या मिला, अभी आपको फिर से 10 पेपर मिला, एंड ऑल दीज 10 पेपर आर ऑल्सो अगेन फ्रॉम द गुड रेप्यूटेड पब्लिशर. अभी आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट 5 ईयर का मिला, मतलब 2020 में पब्लिश हुआ है, 2021 में, 2022-23 में पब्लिश हुआ है. ठीक, अब उससे रिलेटेड रिव्यू भी मिल गया मुझे, तो आई विल अगेन मेक अ कॉपी ऑफ इट. अभी इसको मैं दूसरे पेज में कॉपी कर लूंगा बिकॉज इट इज गिविंग मी द साइटेशन ऑफ 10 and 10. ओके,
And now what I'll do is I'll go to this option, past year, and I'll search for it. अभी क्या किया इसने, अभी मुझे 10 और पेपर इसने दिया. Okay, do it fast. थोड़ी स्लो हो गई हमारे इंटरनेट. ओके, नाउ इट इज गिविंग मी पास्ट ईयर. तो ये हो गया 2023 के पेपर, कुछ 24 के पेपर हैं. 23 और 24 के पेपर, 10 पेपर इसने हमको दे दिए. ठीक है, अभी आप इसको भी कॉपी कीजिए एंड देन यू कैन पेस्ट इट इन योर वर्ड. फिर से आ जाइए, इसका ये हो गया सर्वे टाइप ऑफ इट. अभी मुझे बताइए, ये आपके पास 3 पेज के मटेरियल आ गए, जिसमें कि कुछ चीज है, यू कैन एलॉबरेट इट एंड यू हैव दीज 30 पेपर एज अ रेफरेंस. You can make or work for 2 or 3 days and you can create a good short survey paper for the conference. बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? I think you'll make it. ठीक है. दूसरा चीज है कि you can copy as it is to the, let's say, the references. It is okay, but the text you need to rewrite it by your own, because आजकल conferences or journals में when you go for the plagiarism, it is also checking whether you have created the data from the uh, from the generative AI or not, right? So they also check it. So make sure that whatever you are getting from here, the text you are getting from here, should be rewritten by yourself. Okay, but it will give you the initial way of doing it, and you will get a good amount of paper, good number of paper and good quality of papers here to initiate your initial literature survey work. ठीक है. Another tool is called Elicit. Elicit को भी देख लेते हैं. Elicit tool है. अब ये भी पूछ रहा है कि ask some questions related to your research. So I'll ask the question, what advancement has been done in Internet of Things security? Okay, and I'll ask this question to it. देखते हैं क्या करता है ये. अब इसने क्या किया, 4 पेपर का समरी बना के मुझे देगा यहाँ पर. और दूसरी चीज क्या करेगा, ये काफी सारे पेपर्स हमको यहाँ पर लिस्ट आउट करके दे देगा. ठीक है, एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट पेपर दैट विल कम अप. ठीक है, दिख रहा है आपको, धीरे धीरे करके काफी सारे पेपर्स यहाँ पर लोड होते जाएंगे. आप जब इसको देखेंगे तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द IoT सिक्योरिटी. एंड जो PDF आपको अगर हाईलाइट फॉर्म में दिख रहा है, मतलब कि ये
पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर पीडीएफ नहीं है वहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा है। जिस पर्टिकुलर पेपर का पीडीएफ अवेलेबल है इनके पास, उस पर्टिकुलर पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ वो मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप पेपर लोड करना चाहते हैं तो लोड इट मोर। दूसरी बात, जब आपने देखा होगा, जब आप लिटरेचर सर्वे या कुछ सर्वे पेपर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक टेबल बना रहता है। उस टेबल में पेपर रहता है, पेपर का समरी रहता है, एंड यू हैव सम मोर एट्रीब्यूट्स टू इट। ठीक है। तो ये कुछ चार पेपर का समरी करके इन्होंने दिया होगा। तो वहां पर आप ऐड अप कर सकते हैं कुछ और चीजों को, एंड यू कैन क्रिएट दैट टेबल फ्रॉम हियर। तो हमको जो पेपर मिले हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम फाइंड आउट करें कि व्हाट आर देयर मेन फाइंडिंग्स, राइट। सो उसको हम ऐड अप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग इट। तो देखिए एक और कॉलम ऐड हो गया मेन फाइंडिंग का। एब्स्ट्रैक्ट समरी उस पर्टिकुलर पेपर में क्या है एक लाइन पे तो दिया ही हुआ है, प्लस मेन फाइंडिंग्स ऑल्सो आपको उस पेपर के मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ और भी ऐड अप कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि you will get the research gap in that particular paper which is highlighted। तो रिसर्च गैप भी आप ऐड अप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेपर। ये आपका कॉलम और जो कॉलम है वो ऐड होते जाएगा। तो at last you will get the bunch of columns which are related to that particular paper, and you can make a copy of it, rewrite it, and use it for your work. So it will make your work more, you can say that, more efficient and accurate way। ठीक है। तो ये धीरे धीरे मेन फाइंडिंग्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट स्लो है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इट विल कम वेरी फास्ट। ठीक है। सो आप चाहें तो जितना भी लोड करना चाहें आप यहाँ से लोड मोर करके और भी बहुत सारे पेपर्स लोड कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज दोज पेपर्स फॉर योर वर्क। मेन फाइंडिंग हो गया, रिसर्च गैप हो गया। तो आप जिसमें रिसर्च गैप ये मेंशन नहीं कर पा रहा है, इसने नो मेंशन लिखा है, अदरवाइज इट हैज मेंशन द रिसर्च गैप्स आल्सो। लिमिटेशंस है यहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शंस है दैट यू कैन ऐड इट अप। आई होप दिस पर्टिकुलर site will help you on that. Then there is another application tools that we can use it for our literature work is called Chat PDF. Now, what is this Chat PDF and how important it is? Because I'm using it, so I know what important thing that it can do for me. So इस चैट पीडीएफ में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो पेपर का पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन टू हियर, दिस इज द प्रॉम्प्ट, दिस इज द पेपर आई हैव uploaded here। As you know that IEEE access is of free access. So I have one paper related to Internet of Things security. So here I have added here, and I can ask any questions related to it. जैसे मैंने लिखा था generate the summary of this particular paper, it is generating the summary of it. What is the main finding of this paper? It is giving me the answer. What is the main finding of it? मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ that what are the solutions to the attacks in Internet of Things applications।
देखिए, मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, व्हाट आर द सॉल्यूशन टू द अटैक्स इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस, इसके आंसर ये इसी पीडीएफ में ढूंढेगा, वो और कहीं नहीं ढूंढेगा, सिर्फ इसी पीडीएफ में ढूंढेगा और आपको बताएगा कि इस पेपर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हैं या नहीं। सो लिखा भी हुआ है, द पेपर डिस्कस सेवरल सॉल्यूशन टू एड्रेस द सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड टू इट, or the solution is highlighted. These are the solution that paper has given. So you see whatever question, see हम लोग पेपर क्यों पढ़ते हैं, to get some answers. Let's say उसने क्या मेथड यूज किया है, लाइक वो कौन कौन से पैरामीटर में अपने रिजल्ट्स को टेस्ट कर रहा है, व्हाट what are the research gap that they have identified, right? So all those are the questions that we'll ask while reading a paper. So आपको पेपर को रीड आउट नहीं करना, आपको क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछना है, एंड आपके जो आंसर हैं उस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड, that will come here in that particular part, which is the prompting part. यहाँ पर आप prompt करेंगे and that is going to generate. ये जो जनरेट कर रहा है, इट इज जनरेटिंग ओनली फ्रॉम दिस पीडीएफ, नॉट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, दैट यू शुड नो. ओके, okay, so this is your chat pdf. It is very good tool that I am using. Instead of giving more time to a particular pdf, I'll just put the pdf here and it will do the rest of the thing. Another is consensus. Consensus भी एक टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग गुड रिसर्च पेपर्स. मैंने पूछा कि व्हाट आर द एनहांसमेंट इज डन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी. I'll make it like co-pilot mode and I'll search for it. Now it is going to give me bunch of papers which are related to it, related to this particular question. एनहांसमेंट इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, की इनसाइट्स ऑफ इट. ये अभी 10 पेपर लिया है और 10 पेपर लेके ये एक जस्ट एक क्या एक राइट अप बनाया है. ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है जस्ट एक राइट अप बनाया है 10 पेपर को लेके. ये हैं वो पेपर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 10 पेपर को हाईलाइट करके, जैसे हमारा फर्स्ट वाला था उसके बेसिस पे अभी और कुछ क्वेश्चन इसमें सजेस्ट किया है जो आप पूछ सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू आंसर दैट थिंग विच हैज बीन हाईलाइटेड. यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड रीराइट दैट टेक्स्ट. टेक्स्ट को रीराइट कीजिए एंड दैट यू कैन यूज. क्योंकि एज आई टोल्ड यू देयर आर प्लगरिज्म tools which are also finding out the AI generated text. तो ये भी एक AI generated text है, but it is specific to your research question. So that's all. I'll not take much of your time. It has already been over. So that's all from my side. If you have any question, you can ask me. I'll be very happy to give you the answer. I hope that after this session, you can use some of these tools to enhance your skill and you can use it for your teaching and research. Thank you so much. Now over to host.
Anyone with any question? Okay, somebody has written some name. Let me copy this. Anuvedini. Okay, what is it? Anuvedini Global AI Translation Tool. Very good. Anuvadini, sir. Hello, sir. It's a PDF to text. Yeah, it's very nice platform, sir. Yeah. There's this one, right. Very nice platform. किस चीज के लिए है सर? सर ये जैसे हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स में हम करते हैं ना, मतलब वॉइस टाइपिंग या ट्रांसलेट करते हैं या फिर इनपुट करते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा एक पोर्टल है। इसमें जैसे कि हम लोग अगर इंग्लिश में कोई अपना एक स्लाइड बनी हुई है और हमको वो किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और काफी अच्छा है कि ये है सर। चलिए ठीक है, इसको मैं अब जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा आई विल ऐड इट। थैंक यू सो राइट मच। सर। यस। सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है सो आई विल एंड एंड आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर meeting. Am I allowed to exit? Okay, thank you very much. Have a good evening to all.